So, welcome everyone to the first DevTalk of Thaparasian student chapter. So, so the topic of today's session is like GNU slash Linux. So let's just start with like the history of like how Linux came into existence. So, you must have heard about Linus Torvalds, right? So, this is the guy who had come up with the Linux kernel, and so this is a email he sent 1991 about him doing like a hobbyist like kernel to work with to work as an alternative to Minix, which was an educational sort of Unix clone, but which was proprietary. So like it wasn't very accessible to students. So he created an alternative clone, which was open source. And yeah, so like this is how the entire thing started. And it was like a very small project, but then like it snowballed into like probably one of the biggest software projects in existence. So yep, that is Linux. And Linus Torvalds, this guy was responsible for creating the kernel. So like so when our operating system has many components, right? So one of them is a kernel. तो लाइनस टॉवल्स ने ये कर्नल बनाया था, एंड ऑन टॉप ऑफ द कर्नल देयर आर लाइक मेनी अदर थिंग्स, एंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स वे made by this organization called GNU. So what is GNU? So GNU, it is also one of the more important organizations along with the Linux Foundation. So there's a thing called the Free Software Foundation. इसको ना रिचर्ड स्टॉलमैन ने बनाया था. So this is like another important player in the game. So this guy is a very strong advocate of the free software movement, which says कि तुम्हारा जो भी software हो, that should be free and open source. So what that means is like any software code that you have, you should be able to view its source code, you should be able to modify it, you should be able to redistribute it without any permissive licenses. तो पहले जो Unix system हुआ करता था, that was a proprietary system. Like it was I think owned by UC Berkeley, if I remember correctly, and it wasn't free. Like you had to pay for it, you had to pay for a license and everything, right? You could not view its source code, you could not modify it. So to change all that, like Richard Stallman created open source alternatives of all like Unix commands. So like many things, जैसे GDB जो है, GDB is also a GNU core util. Even commands like bash was also created by Richard Stallman. So this is like the next important thing. So इसलिए like you would hear many times people referring to like Linux, the operating system, as GNU/Linux or GNU plus Linux. So this is like just a thing I wanted to throw out. So like the GNU project is extremely important. Like you can read up about it. Like FSF के भी articles होते हैं on like the GNU Foundation. Like you can just read up about these. So yeah, this is all about like Linux and Free Software Foundation. So the very core principle of Linux is software should be free and software should be modifiable and it should be redistributable. So matlab you should the entire operating system should be visible and open to the end user. Like you should be able to modify it, you should be able to tinker with it. Mac OS and Windows में क्या होता है? Most of the files are like not hidden, they are like compiled and executables, right? So matlab you cannot view core like OS code and you cannot modify it, you cannot change it. But Linux ka the entire like concept is you should be able to modify it, change it, access the code. And the entire Linux kernel is built on like open source. Like wait, if I can show you. Like it's not on GitHub, but कोई अगर mirror क्या है Linux kernel. Yeah, so you can like see the entire kernel development here. This is like I think a mirror of it. Like इसका mailing list में चलता है, GitHub पे नहीं चलता. But yeah, the entire kernel is on GitHub. And in a fun fact, जो Git हम लोग use करते हैं, like Git was also created by Linus Torvalds. So that guy had created Git so that it is easier for everyone around the world to collaborate on Linux kernel development. So yeah, that's just like a brief introduction to Linux, and it is all about freedom. It is all about giving you the power as an end user to tinker with your system, to modify your system, to play around with your system, and to create tools which are not like behind a paywall, whose source code you can see and modify, right? So this is all about Linux, and
And due to all these principles, like Linux from the start has been extensively used in like computer science and development. Almost जितने भी tools बनती है development के लिए सबसे पहले like Linux और Unix systems के लिए बनती है. So yeah, and that is why I think, as developers, as computer science enthusiasts, it is important to learn and know about Linux. And on the practical side of things, like the Linux command line, the terminal, it's an extremely powerful tool, and it can, increase your productivity by multifolds. And Joe normally GUI programs say are not able to do, like you can do it with like using the command line. So yeah, like anyone got any questions? या फिर कुछ जानना हो? And like feel free to interrupt anytime, मतलब not an issue. GNU का फुल फॉर्म भी तो काफी इंटरेस्टिंग है. Oh, haha. So yeah, I was about to talk about this. No problem. GNU So is not Unix. yep, it's not Unix. It's a, like a recursive हाँ. acronym. It's GNU's not Unix. तो हाँ, इसका history वही है. Like Unix was like a sort of closed system जो मतलब यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ने बनाया था बर्कली में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. बट वो लोग दे वर वेरी हेजिटेंट इन लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग द कोड फॉर फ्री, एंड बहुत सारा लाइसेंसेस का पंगा था. बट लाइक द कोर यूनिक्स फिलोसफी, लाइक दैट इज लाइक स्टिल लिव्स इन द कोर ऑफ लिनक्स एंड एवरीथिंग. तो या सो व्हाट रिचर्ड स्टॉलमैन डिड वाज लाइक यूनिक्स के जितने भी कोर यूटिलिटीज थे उसको ही मतलब बेसिकली ही कोडेड इट हिमसेल्फ एंड रिलीज इट for free, and like made it like open source wasn't a term then, but like he released it for free, like uska source code visible tha. So yeah, so like people do not recognize it just Stallman, unfortunately, हमारी generation में. But yeah, he's like a super important guy in the entire movement. He's still like advocating for free software. And अच्छा, और free software और open source में भी एक difference है, and there's a good article on this, free software versus open source. So you can read up about it. Yep, why open source is the point of free software. So like you can read about this to get the philosophical aspect of like free software. And और एक popular expression है. So Linux or free software, it's like Linux is free as in free speech, and it's also free as in free beer. So like the price is free and it gives you freedom, like it's Libra. तो हाँ, Libra is also another term that's commonly used, like हाँ Libra use करते हैं. तो बहुत सारे like utilities में like you'll find like जैसे Libra Office, this is like an open source alternative to Microsoft Office. So yeah, like that is like the core philosophy behind Linux. इसका you can also check up Linus का Autobiography, which is like very well written. मैंने पढ़ा था. It's like a very easy read. हाँ, ये वाला just for fun. You can check this out. ये भी अच्छा book है. Like if you're interested in like how Linux was created. Like it's not doesn't delve too much on the technical side. It's more about like his personal story. So this is also a fun read. So this is all about Linux. And okay, so another thing, like you all must have heard about our distributions, right? Like I think हमारे classes में they tell us to use Ubuntu. And okay, it's Ubuntu, not Ubuntu. I hope like the Thapa teachers understand that someday. And Yes. it's Linux, not Linux. बहुत cringe होती है यार Linux सुन के. But yeah, so Linux. this is Ubuntu. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इफ सम ऑफ यू हैव बीन इनटू, आई मीन लाइक एंड्रॉयड रोम्स, अगर जैसे साइनोजेन ये सब वगैरह होते थे, तो द कॉन्सेप्ट इज समवट सिमिलर. तो लाइक इट्स नॉट एज ड्रास्टिक एज तुम्हारा, लाइक इट्स नॉट कंपेरेबल बट इट्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर. तो डिस्ट्रीब्यूशंस यूज द सेम लिनक्स का कर्नल, लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, लाइक द कर्नल एवरीथिंग, इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग, बट दे डू सर्टेन थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. जैसे Ubuntu इज अ लाइक फिक्स्ड रिलीज सिस्टम, तो उसके वर्जन्स होते हैं, लाइक वर्जन 21, वर्जन 22, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन्स होते हैं. आई थिंक 20 इज द लेटेस्ट LTS इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तो Yes. या तो Stable 20.0. हाँ 20.04. नाइस. तो या तो जैसे ये फिक्स रिलीज होता है, बट लाइक द थिंग आई एम यूजिंग राइट नाउ, इट्स कॉल्ड मंजारो. तो मंजारो इज अ रोलिंग रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें क्या होता है ना, मंजारो में वर्जन्स नहीं होते. तो टू अपग्रेड योर उबंटू, जैसे हाँ इट्स लाइक विंडोज़, मतलब विंडोज़ 10 में हो तुम और विंडोज़ 11 एक वर्जन अपग्रेड, या फिर विंडोज़ 10 में हर 6-7 मंथ से एक अपडेट आता था ना, फॉल क्रिएटर्स अपडेट वगैरह वगैरह. तो उबंटू में भी वैसे ही चलता है इन फिक्स्ड रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स. तो लाइक वर्जन्स होते हैं एंड देन यू हैव टू अपग्रेड लाइक द एंटायर वर्जन. सो द बेनिफिट ऑफ इट इज थोड़ा स्टेबल रहता है.
But the downside of it is you are not on latest software. So how Manjaro works is Manjaro and Arch Linux is like, if you have heard about it, how that works is तुम्हारा it's a rolling release system. तो तुम्हारा you can update the system anytime. Like if I do Pacman SYU, ये legit पूरा system upgrade. Like it will not just upgrade software, like kernel वगैरह पूरा सब, like it's a total software upgrade. तो मैंने अभी अभी रिसेंटली किया था, तो आई डोंट थिंक अभी कुछ होगा, बट हाँ ओके, लाइक देयर आर सम थिंग्स. तो लाइक एवरी डे और टू लाइक कुछ नया नया आ जाता है. तो द डाउन साइड इज थोड़ा अनस्टेबल होता है, बट यू कैन यूज इट एज अ डेली ड्राइवर. एंड बट या लाइक यू आर ऑन मोर और लेस कटिंग एज सॉफ्टवेयर. तो हाँ, ऐसे लाइक हर डिस्ट्रीब्यूशन में दे डू स्पेसिफिक थिंग्स डिफरेंटली. जैसे इवन इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, सो इन आर्च बेस्ड सिस्टम्स यू डू इट यूजिंग पैकमैन. Like this is how I installed software, like package name. But तुम्हारा on Ubuntu use apt. तो ऐसे like कुछ कुछ differences होते हैं, like different फिर installation processes different होते हैं तुम्हारे like अलग अलग systems के. तो यार जैसे like this is like a full system upgrade right now. So yeah, so these are like distributions. So there are like various kinds of distributions. Like the oldest and most important ones are Debian. Debian is like a mother to Ubuntu. Ubuntu is a Debian derivative. तो जो भी मतलब डिवाइन टाइप के होते हैं उसको लाइक डिवाइन डेरिवेटिव्स या फिर उबंटू डेरिवेटिव्स बोलते हैं. तो उबंटू इज़ अ डिवाइन डेरिवेटिव. फिर पॉप ओएस अगर सुने होंगे, लिनक्स मिंट, ये सब तुम्हारे लाइक दे कम अंडर द डिवाइन फैमिली. एंड एपीटी वगैरह यूज़ करते हैं. सबका थोड़ा माइनर माइनर डिफरेंसेस होता है, बट या लाइक दीज आर अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. सो लाइक पॉप ओएस इज अ लाइक really good like Ubuntu fork. Agreed. If you've heard about it. Yeah, like काफी driver support बहुत अच्छा है, and like the UI is amazing. Plus, तो हाँ, plus instead of बैटरी भी Ubuntu बेटर है. I recommend. हाँ, बैटरी भी बेटर है, exactly. एंड Like अच्छे से मीडिया के optimize लिए किया अलग हुआ है. रिलीज है. हम्म. तो ऐसे लाइक हर डिस्ट्रीब्यूशन के अपने खुद प्लसेस एंड नेगेटिव्स होते हैं. सो दीज आर व्हाट यू कॉल डिस्ट्रीब्यूशंस और डिस्ट्रोज इसको बोलते हैं, लाइक इन शॉर्ट. So these are about distributions, and then there's something called a desktop environment, which is like the next thing. So desktop environment क्या होता है? It's like an Android skin, but like और भी थोड़े differences होते हैं, like packages अलग होते हैं, but like desktop environment has everything to do with the UI. तो I'll just show you some screenshots of GNOME जो Ubuntu में default होता है. So GNOME is sort of not exactly like Mac OS or Windows, like sort of in between, and like it has sort of features of both. So like this is how GNOME looks, like dock रहता है वगैरह. GNOME 40 आ गया by the way, and GNOME 40 में काफ़ी ज़्यादा like अच्छी चीज़ है, but I think Ubuntu में अभी तक आया नहीं है. So yeah, GNOME 40 is pretty cool. You can like upgrade कर लेना जब भी आ जाए. Ubuntu में नहीं आया अभी. हाँ, Ubuntu में नहीं है ना, राइट. तो या लाइक ये तुम्हारा Ubuntu में ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लाइक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आने के लिए यू हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट वर्जन अपग्रेड. बट लाइक इफ यू आर ऑन आर्च या फिर लाइक मंजारो में भी इफ यू आर यूजिंग GNOME, तब तुम्हारा लाइक बस सिस्टम अपग्रेड करने से तुम्हारा GNOME 40 भी आ जाता, मतलब लाइक इफ यू वांट टू डू दैट. तो या तो GNOME 40 इज pretty cool. एंड द अदर मेजर वन इज KDE. तो दिस इज वेरी क्लोज टू विंडोज़. लाइक मैं पहले यही यूज़ करता था KDE. तो दिस इज प्रेटी कूल, लाइक काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच है, वेरी लाइट ऑन सिस्टम रिसोर्सेज, एंड यू कैन ऑलवेज चेंज योर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट. तो मतलब इफ़ यू आर ऑन Ubuntu जिसमें GNOME है, तुम उसको चेंज करके KDE कर सकते हो. लाइक थोड़े कॉन्फ्लिक्ट इशूज़ आते हैं, बट इट्स डूएबल. लाइक जस्ट सी एनी यूट्यूब वॉक थ्रू तो हो जाते हैं. GNOME है, देन दिस XFCE, ये तुम्हारा दिस इज़ अ लाइट वेट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट. तो इसका UI उतना अच्छा नहीं है, बट ऑफ कोर्स यू कैन लाइक चेंज इट. But it's very lightweight. So अगर like if you have an old laptop or something, you can like totally run XFCE on it. And yeah, this is another benefit of Linux. Like it's very very light on system resources. बहुत ज़्यादा light compared to Windows or even Mac OS. Okay, Mac OS फिर भी थोड़ा optimized है, तो like it runs fast, but Windows is not optimized at all. So if you have an old laptop, like getting Linux can give it a new leash of life. So yeah, these are like so these are desktop environments. And what I'm using right now, this is a window manager. So I'll talk about window manager later. थोड़ा like convoluted हो जाएगा. But there's another concept called tiling window managers. So this is different from a GUI. Like थोड़ा keyboard based layout है. Like सब चीज़ like keyboard shortcuts से होता है. Like icons वगैरह वैसे कुछ होते नहीं है. तो it's a bit different.
So like you can look, check these out as well later. But to start, like GNOME, KDE, these are amazing. So these are some terms like you'll encounter often. So I just thought like maybe I should like let you guys know. We covered distros and we covered what are तुम्हारा like desktop environments. तो दिस इज लाइक एन ओवरव्यू ऑफ लाइक और भी बहुत सारे लिनक्स टर्मिनोलॉजी है लाइक तुम्हारे फिर विंडो मैनेजर्स होते हैं सो लाइक X11 इज अ पॉपुलर तुम्हारा लाइक विंडो सिस्टम इज द करेक्ट वर्ड तो दिस लाइक हैंडल्स ऑल द GUI पार्ट तो दिस इज लाइक अ फंडामेंटल लाइक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एज वेल तो द X विंडो सिस्टम इससे ही तुम्हारा सारा GUI का इंटरेक्शन होता है तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं लाइक एज यू कीप एक्सप्लोरिंग लाइक लिनक्स एज यू कीप लाइक रीडिंग अप अबाउट इट यू विल स्लोली कम अक्रॉस टर्म्स एंड लाइक एज यू गूगल इट एज यू वॉच लाइक मे बी यूट्यूब वीडियोस लाइक यू विल फिगर इट आउट लाइक बहुत सारे टर्म्स हैं बट इट्स नॉट टू बैड लाइक टू बी ऑनेस्ट तो दिस इज लाइक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दैट एंड चलो इसके बाद लाइक आई वांटेड टू शो यू गाइस समथिंग कॉल्ड पाइपिंग to show you like maybe how powerful the command line is. तो पाइपिंग पढ़ा है क्या अभी तक लाइक इन क्लास No, आई थिंक no. सिलेबस में नहीं ओके मैं एक लाइक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ तो यार टॉकिंग अबाउट यूनिक्स लाइक जो मैं यूनिक्स फिलोसफी का बात कर रहा था तो यूनिक्स का कोर फिलोसफी इज तुम्हारा एवरी टूल शुड डू वन स्पेशलाइज्ड थिंग बट डू इट वेल तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक वन टूल इज डूइंग लाइक अ बिलियन थिंग्स लाइक एवरी टूल शुड बी स्पेशलाइज्ड इट शुड डू वन थिंग एंड डू इट वेल तो पाइपिंग का कॉन्सेप्ट है कि तो ओके लेट्स फॉर एन एग्जांपल ओके तो लेट्स डू दिस तो ओके सो डैश बिन बोल के फोल्डर होता है सो दिस हैज ऑल द बाइनरीज विच आर रिक्वायर्ड तो बाइनरीज आर व्हाट तो तुम्हारा जो सोर्स कोड होता है वंस यू कंपाइल द सोर्स कोड ओके जैसे विंडोज में एग्जीक्यूटेबल्स होते थे ना .exe फाइल्स बाइनरीज सॉर्ट ऑफ दैट इज लाइक दैट बट तो मतलब कोड को कंपाइल करने के बाद बाइनरीज बनते हैं तो जितने भी ऑल द बाइनरीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम लाइक फॉर द बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन फॉर बूटअप टू हैपन ये सब like dash bin folder root/bin में रहते हैं okay and I'll also explain this so basically there's like two main folders there's a root folder there's a home folder right so the root folder I'll just show you yeah so this is the root folder तो तुम्हारा root folder में you have files which are like common to the entire like operating system regardless of the user and तुम्हारा home directory में normally तुम्हारा सारे user का files रहता है तो a home directory is like denoted by this tilde sign and root में like / is root तो तुमको अगर root का किसी में जाना है and you तो like / is how you access the root tilde is how you access the home directory तो if we want to display like all the files in like the all the binaries which are in the root folder like this is what you do तो अभी देखो ऐसे wait I'll just बहुत ज़्यादा बड़ा list है like there's a lot of binaries तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम यू नो कि देखो एक टर्मिनल में इतना ज़्यादा आउटपुट आ रहा है तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम यू नो लाइक स्क्रॉलिंग थ्रू इट लाइक बहुत लंबा लिस्ट है तो व्हाट यू कैन डू टू मैनेज दैट इज पाइप इट थ्रू दिस प्रोग्राम को लेस तो लेस क्या करता है कि एक एक स्क्रीन करके दिखाता है आई प्रेस स्पेस बार दबाने से वो और एक स्क्रीन में चला जाता है एंड क्यू दबाने से इट एग्जिस्ट एंड इट डजंट पोल्यूट द टर्मिनल तो लेस इज अ प्रोग्राम विच इज़ डिज़ाइन टू लाइक शो लाइक द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल या फिर ऐसे कोई टर्मिनल का आउटपुट है उसको मतलब पेज बाय पेज डिवाइड कर दे सो लेस इज अ प्रोग्राम विच डज लाइक वन स्पेसिफाइड थिंग राइट नाउ ये जो बार टाइप का चीज़ है दिस इज कॉल्ड अ पाइपिंग ऑपरेटर सो व्हाट पाइपिंग डज इज बेसिकली एलएस का आउटपुट ये सब है राइट दिस इज लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ सॉर्ट्स so what piping does is you are passing the output of this command into less into so the output of this command is an input for less तो वो फिर डिस्प्ले हो जा रहा है तो now using this you can like chain multiple things and do stuff like ये वाला समझ में आया सबको like was that clear एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में चला जाता है sort of like that and these are like two different programs ls एक प्रोग्राम है less एक प्रोग्राम Okay. yeah तो I'll just show you something a bit more like advanced तो okay what if
हाँ तो ओके लाइक दिस वुड बी अ गुड डेमोन्स्ट्रेशन फॉर लाइक व्हाई द टर्मिनल इज पावरफुल. तो सोचो और एक फोल्डर होता है बिन के साथ यूजर डॉट बिन एक फोल्डर होता है. ऑलराइट, सो यूजर डॉट बिन में वो तुम्हारी यूजर स्पेसिफिक बाइनरीज आर स्टोर्ड लाइक एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स स्टफ लाइक दैट, लाइक नॉट कोर एसेंशियल programs. So let's say you want to display files in both. तो ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा लिस्ट आ जाएगा, like it just keeps going and going. So let's pipe it through less so that like we can like access it properly. And let's say you want to know कितने सारे binaries हैं तुम्हारे सिस्टम में, ठीक है, like दोनों को मिला के, like you want to see how many binaries are in your system, both like in a root binary and in your like user slash binary folder, right? तो इसके लिए what you can do is there's this program called WC. So WC क्या करता है, it just counts the number of words in a string, like a simple word counter है. कोई भी तुम इसको फाइल like text file पास करो, like it just shows you how many words are there in it, ठीक है. तो now what we can do is like since एक string ही output हो रहा है, we can just see how many words are there in that string and that will give us तुम्हारा कितने binaries है, right? So I can just then pipe this through word count. Wait, हाँ like यहीं पे करने से हो जाएगा. Yeah, so I have 10,200 binaries in my system. तो ऐसे करके like pipe करके तो so word count is a simple program that just tells you कितने words हैं. But when you combine it with other operators and chain it using like this piping thing, तब ये काफ़ी powerful हो जाता है. And then इससे और भी हम लोग like चीज़ कर सकते हैं. तो जैसे मैंने पहले से लिख के रखा था, just show you. बेसिकली जो पाइप है वो फंक्शंस यूज करने के लिए यूज होता है ना. हाँ बेसिकली ये ls एक कमांड है, wc एक कमांड है. तो एक का आउटपुट को दूसरे के इनपुट में डाल दो, तो इससे तुम ना चेन कर सकते हो एक एक करके. तो तुमको सोचो इसका आउटपुट चाहिए एंड देन तुमको निकालना है कि कितने लाइक वर्ड्स हैं इसमें या फिर कितने लाइक एंट्रीज है इसमें. तो इसको जस्ट यू पाइप इट थ्रू wc. ओके, सो लाइक अगर हमें दो क्वेश्चन साथ में, जैसे दो फंक्शन साथ में करना, जैसे तो वो भी कर सकता है. हाँ देखो लाइक टू रन वन फंक्शन आफ्टर, ओके तो ये देखो ये ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब इसके बाद ये रन हो रहा है, इसका आउटपुट इसके इनपुट में जा रहा है एंड देन ये रन हो रहा है, लाइक वैसे टाइप का चीज़ हो रहा है. या इफ दैट मेक सेंस. एंड देन फिर ना इसमें बहुत सारा चीज़ ऑपरेशंस कर सकते हैं. तो सोचो मुझे अभी ना इसको सॉर्ट करना है लाइक अल्फ़ाबेटिकली, ऑल्दो ये तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होगा ही, बट सोचो यू हैव लाइक अ डेटा एंट्री विच इज नॉट अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड, ठीक है. अब सोचो अच्छा हाँ और एक चीज़ होता है कि बाइनरी में और यूजर डैश बाइनरी में बहुत सारे कॉमन फाइल्स होते हैं, ठीक है, लाइक कॉमन बाइनरीज विच आर इन बोथ. तो ना सोचो यू वांट टू नो लाइक ओनली द यूनिक बाइनरीज इन अ सिस्टम, ठीक है. तो यू कैन पास इट थ्रू दिस कमांड कॉल्ड uniq. तो ये क्या करता है कि जितना भी डुप्लीकेट एंट्रीज है उसको हटा देगा, ठीक है. तो लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है. नहीं लेट्स क्यों क्या नाउ सी लेट्स डू. हाँ तो देखो 5100, तो ऑलमोस्ट सारे फाइल्स तुम्हारे डुप्लीकेटेड थे, तो लाइक अभी यूनिक आ गए, लाइक इतने यूनिक बाइनरीज हैं मेरे सिस्टम में. एंड यू नो इसको यू कैन लेट्स जस्ट टेक इट फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड. इसके बाद सोचो तुमको यू जस्ट वांट टू नो कि कितने प्रोग्राम्स है तुम्हारे सिस्टम में जो सोचो जिसमें जिप कंटेंट है, ठीक है, लाइक द वर्ड जिप इज कंटेंट. तो व्हाट यू कैन डू इज grep बोल के एक प्रोग्राम होता है. grep क्या करता है लाइक इट so जो भी grep को तुम इनपुट देते हो, it could be a text file, it could be you know any string. What it does is it like filters through that string for the exact parameter you want. तो सोचो मुझे चाहिए all the files like इतने सारे binaries हैं, मुझे बस वही binary चाहिए जिसमें zip है, like the word zip is there, right? So what I can do is I can just use grep in one of the steps and it will show me, so 25 programs have the word zip in it, and if I want to view it I'll just pipe it through list. So देखो लाइक आई कैन लाइक इतने सारे बाइनरीज हैं जिसमें लाइक द वर्ड जिप इज कंटेंट. तो वैसे करके ऐसे चेन कर करके यू कैन डू वेरी पावरफुल थिंग्स. एंड दिस इज लाइक द ब्यूटी ऑफ लाइक यूनिक्स फिलोसफी. तो ऑल दीज कमांड्स लाइक यूनिक कमांड क्या करता है, बहुत सिंपल चीज़ करता है, खाली डुप्लीकेट्स को हटा देता है. grep क्या करता है, तुम उसको इनपुट दे रहे हो, इट जस्ट फिल्टर्स थ्रू दैट इनपुट. सो grep zip व्हाट वुड इट डू कि जो भी तुम्हारे वर्ड में जिप कंटेंट है बस उसको फिल्टर करके आउटपुट कर देगा. sort तुम्हारा sort set in alphabetical order. So these are very simple programs. So when you combine them together, you can like do loads of things. फिर सोचो तुमको
जो भी लाइक 25 एंट्रीज थे ना जिसमें जिप थे, सोचो तुमको उसके ना लास्ट 2 एंट्रीज खाली चाहिए, तो यू कैन यूज दिस कमांड कॉल्ड टेल, N2 करने से ना लास्ट 2 एंट्रीज आ जाएंगे। अब देखो खाली 2 ठो आ गए, एंड दीज वर द लास्ट 2 एंट्रीज। पहले देखो ये था जिप टूल एंड जिप स्प्लिट, दीज आर द लास्ट 2, तो टेल करने से ऐसे लाइक खाली लास्ट के 2 आ रहे हैं। तो ऐसे करके यू कैन जस्ट कीप चेनिंग कमांड्स टुगेदर, तो इट्स लाइक वेरी पावरफुल। सो या लाइक समझ में आया, और वाज इट लाइक टू मच? नहीं आ रहा है समझ, बिल्कुल आ रहे बढ़िया आ है। रहे या तो ऐसे करके वही ना, लाइक एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट में डालो, एंड एवरी प्रोग्राम डज वन यूनिक थिंग एंड इट डज इट वेल। तो दैट्स लाइक अ कोर फिलोसफी, एंड लाइक ये पाइपिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल ऑपरेशन, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड हाँ, और एक प्रिंसिपल दैट इज लाइक यू ऑफन फाइंड विथ यूनिक्स इज दिस प्रिंसिपल कॉल्ड KISS, which is keep it simple. Keep it simple. So yeah, like it follows that philosophy. And इसके साथ और क्या दिखा सकता हूँ? हाँ, ऑल्सो सोचो अभी तुमको मैंने यूनिक कमांड दिखाया, फिर तुम कहीं पे भी इंटरनेट में यू फाइंड सम न्यू कमांड, ओके, नाउ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इट डज एंड हाउ टू यूज इट। सो सबसे पहला चीज़ होता है यू कुड डू इज यूनिक डैश डैश हेल्प। सो दीज आर कॉल्ड फ्लैग्स, ठीक है? कोई भी कमांड होता है उस पर यू कैन ऐड फ्लैग्स। तो हेल्प करने से ना लाइक यू गेट इट्स डॉक्यूमेंट, लाइक इट्स नॉट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बट लाइक यू गेट लाइक अ मैनुअल, लाइक अ हेल्प फाइल, राइट? तो इसमें देखो लाइक इस पर लाइक सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि लाइक अगर डैश डी डालूँ तो खाली डुप्लीकेट लाइन्स प्रिंट करेगा, अगर डैश आई डालूँ तो इट विल इग्नोर लाइक केस डिफरेंसेस। मतलब यूनिक क्या करता है, इट फिल्टर्स आउट ऑल द डुप्लीकेट्स, राइट? बट सोचो लाइक यू हैव समथिंग इन ऑल कैप्स एंड यू हैव द सेम वर्ड इन स्मॉल लेटर्स, तो अगर डैश आई कर दोगे तो वो कैपिटल वाला भी इंक्लूड कर देगा, स्मॉल वाला भी इंक्लूड कर देगा। तो यू कैन लाइक फाइंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग लाइक डैश डैश हेल्प। एंड अगर तुमको प्रॉपर उसका मैनुअल पेज चाहिए तो यू कैन यूज दिस कमांड कॉल मैन, एंड सोचो यूनिक करता हूँ तो you get a proper manual page. So this is like जैसे like if you guys have done web development or anything, ठीक है, जैसे React का documentation होता है, JavaScript और like Java का documentation होता है, C++ का documentation होता है, वैसे ही like ये हर commands के भी documentation बनाए हुए हैं, and you can like see this using man. So this is like a proper detailed manual file. तो आई यूजुअली यूज़ लाइक हेल्प में तुम्हारा लाइक सारे कॉमन एंड यूजफुल चीज़ आ जाते हैं, एंड डिटेल्स में चाहिए तो यू कैन ऑलवेज यूज़ मैन। तो मैन यूनिक करने से, या फिर एनी कमांड लाइक इवन सिंपल कमांड्स लाइक ls, लाइक जो बहुत यूज़ करते हैं, तो ls करने से लाइक इवन ls हैज़ मेनी ऑप्शंस। तो देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं, एंड यू कैन लाइक फाइंड आउट अबाउट ऑल ऑफ दीज लाइक राइट फ्रॉम योर टर्मिनल, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सीधा लाइक मैनुअल पेज से आ जाता है। एंड इफ़ यू डू हेल्प तो सारे लाइक ऑल द कॉमन फ्लैग्स ये सब आ जाते हैं। And another useful thing is this command called TLDR, which I use a lot. So if you do TLDR ls, तो ये ना सबसे कॉमन चीज़ें दे देगा। एंड देखो इसमें लाइक इट्स स्टिल अ बिट आई मीन लाइक इट्स स्टिल अ बिट रोबस्ट एंड इट्स स्टिल अ बिट इलाबरेट, राइट? देखो जैसे ये सब फ्लैग्स नॉर्मली कोई यूज़ करता नहीं है, लाइक डैश एफ, ये मुझे भी अभी तक पता नहीं था, लाइक डैश डब्ल्यू, ऑल दीज, ठीक है? बट दिस इज लाइक द एंटायर लिस्ट। व्हाट TLDR डज इट गिव्स यू लाइक द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज थिंग्स। तो ls कमांड से सबसे कॉमन ऑपरेशन यही होते हैं, ये इफ़ यू वांट टू लिस्ट फाइल्स पर लाइन, इफ़ यू वांट टू लिस्ट ऑल द फाइल्स दैट यू हैव इन अ सिस्टम, if you want to list all the files and have it, अच्छा, और this thing is called flag chaining. तो basically सोचो ls, okay, let me go to academy folder, let's say I go to books. तो देखो ls करने से ये सब आ रहा है, राइट? नाउ इफ आई वांट लाइक मोर डिटेल्स आई कैन डू ls-l, तो लाइक ज़्यादा डिटेल्स में आ जाएंगे। ये सब लाइक रीड राइट परमिशंस हैं, एंड दिस इज लाइक द फाइल साइज, दिस इज़ व्हेन इट वाज क्रिएटेड, ठीक है? तो ये सब आ जाता है। बट नाउ सी 4096 आई थिंक दिस इज तुम्हारा बाइट्स में है, बिकॉज इट्स लाइक अ डायरेक्टरी, राइट? तो व्हाट यू कैन डू इज LH करने से लाइक ह्यूमन रीडेबल में आ जाता है। तो हाँ देखो 4 किलोबाइट आ गया, दिस इज़ लाइक मोर ह्यूमन रीडेबल। तो ये क्या हो रहा है, तो ls इज़ अ कमांड जिसमें ये फ्लैग्स डालते हैं। L क्या करता है, गिव्स अस लाइक अ लॉन्ग लिस्टिंग, एंड H क्या करता है, टर्न्स इट इनटू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। तो ऐसे करके यू कैन लाइक चेन अ लॉट ऑफ फ्लैग्स एज वेल। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट यही है, डैश एल डैश एच करो भी यही आएगा, बट यू कैन लाइक पुट देम टुगेदर। एंड सारे पॉसिबल फ्लैग्स के लिस्ट यहाँ पे होते हैं,
हेल्प में अगर जाओगे तो आ जाएंगे, लाइक ऑल दीज फ्लैग्स यू कैन यूज़। एंड अगर सबसे कॉमन मोस्ट यूज्ड वाले चाहिए तो TLDR यूज़ कर सकते हो एटलीस्ट। नाउ TLDR इज़ नॉट अ कॉमन यूनिक्स पैकेज, तो यू नीड टू इंस्टॉल इट, मतलब लाइक apt इंस्टॉल TLDR एंड दैट विल वर्क। तो दिस इज़ लाइक अ वेरी हेल्पफुल थिंग विच आई यूज़ क्वाइट ऑफन, तो ये भी काफ़ी कूल चीज़ है। एंड लाइक इवन कोई भी कमांड लाइक FFmpeg, इससे यू कैन लाइक मैनिपुलेट वीडियो फाइल्स, यू कैन लाइक क्रॉप स्टफ, यू कैन मर्ज वीडियोस, ऑडियो फाइल्स में भी काम करता है। तो मतलब तो इसका ना मैनुअल पेज देखोगे, इट्स लाइक ह्यूज। मैं इसका ना मैन दिखाता हूँ। इसका बहुत बड़ा मैनुअल पेज है, ठीक है, ख़त्म ही नहीं होता, एंड इट्स लाइक वेरी पावरफुल। या बट इसका लाइक सबसे कॉमन ऑपरेशंस ये सब ही हैं, लाइक मोस्टली जिसके लिए तुम यूज़ करोगे। तो TLDR में खाली वो सब तुमको फिल्टर करके बस सिंपली बता देगा कि अगर तुमको ये करना है तो कैसे करोगे, तो काफ़ी हेल्पफुल है। तो दिस आर नाइस कमांड, लाइक हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू लाइक गेट दिस। एंड या सो डैश हेल्प, मैन एंड TLDR, इन तीनों के यूज़ करके यू कैन लाइक फाइंड आउट एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट एनी लिनक्स कमांड। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि ये सब कमांड्स कहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, तो विच बोल के कमांड होता है। नाउ से यू वांट टू नो लाइक या जैसे TLDR जो मैं बता रहा था, इसके ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो विच करने से लाइक इट विल शो यू लाइक ये बाइनरी फोल्डर में TLDR इंस्टॉल्ड है। तो दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ अ हेल्पफुल थिंग एज वेल। एंड या तो ऐसे कर करके ना मेनली ऐसे पाइप करके रीडायरेक्शन करके यू कैन लाइक डू अ लॉट ऑफ स्टफ एट द सेम टाइम। फिर तुम्हारा ना बैश स्क्रिप्टिंग भी एक आएगा, लाइक इन प्रैक्टिकल कंप्यूटिंग ही, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। सो इन बैश स्क्रिप्टिंग इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो स्क्रिप्टिंग विद पाइथन और जावास्क्रिप्ट, बट लाइक you can, but bash is a scripting language in itself, and उस पे काफ़ी सारे scripts लिखते हैं, तो उससे like you can automate a lot of things, right? तो ये कवर हो गया। now like यहाँ तक like समझ में आया ना, like क्या क्या बोला? like कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर you want to know more और कुछ समझ में नहीं आया, like feel free to interrupt me or let me हाँ समझ आ गया, बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है। टॉक बहुत बढ़िया जा रहा है। राइट तो अभी ना ये तो थोड़े लाइक कमांड लाइन की चीज़ हो गए। अब मैं ना थोड़े कूल चीज़ दिखाता हूँ। तो इफ़ यू नोटिस ओके लेट मी गो टू अ कोडिंग डायरेक्टरी, ठीक है यार। ओ हाँ, और एक थिंग इफ़ यू नोटिस मैं LSD यूज़ करता हूँ। तो LSD से क्या होता है ना, लाइक इट गिव्स यू दीज लाइक आइकन्स एज वेल, को मैं कंपेयर करता हूँ। LS करने से ऐसा आता है, LSD करने से ऐसा आ जाता है, लाइक आइकन्स वगैरह आ जाते हैं। हाँ रुको, इसमें ना हाँ तो ऑफिशियल वेबसाइट की फाइल्स दिखा तो मेरे हिसाब से मिल रहा है। हाँ तो देखो इसमें ना लाइक जावास्क्रिप्ट के फाइल्स में JS आ जाता है, CSS वाले में CSS3 आ जाता है, तो लाइक काफ़ी कूल है। तो लाइक LSD यूज़ कर सकते हो। बट दैट वाज नॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक ये वाला। सो इफ़ यू सी लाइक यहाँ पे ACM ऑफिशियल लाइक फोल्डर नेम आ रहा है, आई एम गेटिंग द गिट ब्रांच आई एम ऑन, एंड इट शोज मी वेदर लाइक आई हैव टू कमिट समथिंग और नॉट। तो लाइक जैसे अगर मैं ब्रांच चेंज कर दूँ, सोचो इफ आई गो टू आई थिंक मास्टर है, या तो देखो यहाँ पे लाइक दिखा देते हैं कि मास्टर ब्रांच पे हो। नाउ सोचो ओके आई विल नॉट मेक चेंजेस इन मास्टर। Yep, now say I edit a file, so the readme edit कर दूँ। Wait, क्या हो गया? It's not here. Say I like make some basic edit in the readme. Okay, and this is what I used was Vim. तो इसका भी this is like a very old tool, like I think 70s या 60s का है, like VI बोल के tool था. So this is a, you can think of it as a terminal notepad, but it's much more powerful. And Vim को बहुत ज़्यादा customize कर सकते हो। and Vim का ये होता है कि it's like तुम्हारा it's a modal editor। तो अभी ना like और arrow keys की जगह you usually use H, J, K and L keys, and it's very keyboard driven। तो अभी I'm in the editing mode, तो अभी अगर मैं कुछ टाइप करूँ like I'm pressing letters but like it doesn't work। अगर मैं insert mode में जाऊँ and I do something, it changes। तो yeah, like this is a modal editor। I'll maybe do a dev talk on this sometime as well, but yeah, this is like a very popular terminal editor।
Okay, anyways, so let's just make a change here. Okay, चलो यहाँ पे like just add another T, ठीक है. हाँ, तो अब देखो मैंने चेंज कर दिया ना, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि लाइक आई हैव डन अ चेंज. लाइक इफ यू नोटिस, पहले वाले में इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन मार्क, नाउ इट्स एन एक्सक्लेमेशन एंड अ क्वेश्चन मार्क, व्हिच मींस तुम्हारा लाइक यू मेड सम चेंजेस, यू शुड प्रॉब्ली कमिट देम. तो ये सब क्या है, तो दिस इज लाइक ऑन माई टर्मिनल, लाइक और तुम्हारा नॉर्मल टर्मिनल अगर देखोगे, वेट, डू आई हैव नॉर्मल टर्मिनल कंसोल, आई हैवंट ओपन दिस, वेट मैं ना बैश में जाता हूँ. हाँ, नॉर्मल टर्मिनल में तुम्हारा ये आता है. तो इफ आई गो टू द सेम थिंग, हाँ, तो देखो लाइक नॉर्मल टर्मिनल पे विदाउट एनी चेंजेस लाइक ऐसे आता है, इट जस्ट शोज यू कौन से डायरेक्टरी में हो. बट लाइक इन माई थिंग इट shows you like what branch you are on, whether you have to, whether any changes were made, तुम्हारा Node.js का कौन सा version installed है, and like how long it took a command to execute, right? तो ये सब details आ रहे हैं, and these are like very very helpful like when you're like working, especially like when you're working with Git. Like कभी कभी क्या हो जाता है, like you are on a different branch, you don't realize it, you do some commits and then you're like shit, I was on a different branch, and like you constantly have to do git status to like see कौन से branch में हो. तो this is like very helpful and like it looks aesthetically pleasing too. So what this program is, it is something called Starship. I'll just show it to you guys. The Linux Starship. So this is called a prompt. तो prompt क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो आ रहा है ना, लाइक कुछ भी कमांड टाइप करने के लेफ्ट साइड में जो है, लाइक दिस एंटायर थिंग, दिस इज अ प्रॉम्प्ट. तो दिस इज लाइक द डिफॉल्ट बैश का प्रॉम्प्ट. यू कैन चेंज दिस प्रॉम्प्ट एज वेल लाइक बैश आरसी में जाके, बट लाइक काफ़ी एफर्ट होता है. तो लाइक हाँ, यू कैन लाइक चेंज की, मतलब सोचो तुमको ये देखना नहीं है, लाइक ये लैपटॉप नाम देखना है, तो यू कैन रिमूव दैट एंड ऑल. तो दिस इज अ प्रॉम्प्ट. तो यहाँ पे दिस इज अ प्रॉम्प्ट एज वेल, लाइक ये जो ऊपर वाला पार्ट है. तो दिस इज स्टारशिप, लाइक दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये. तो लाइक आई हाईली रिकमेंड लाइक यू गाइस कुड चेक दिस आउट, लाइक स्पेशली इफ यू वांट टू यूज लाइक लिनक्स फुल टाइम, और इवन इफ लाइक यू आर ऑन विंडोज, यू डू डेवलपमेंट ऑन लिनक्स, सो से यू आर ऑन WSL या फिर किसी में, तो स्टारशिप इज़ अमेजिंग, लाइक हेल्प्स यू अ लॉट. तो यू कैन चेक दिस आउट. इसका इंस्टॉलेशन इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू. तो दिस इज स्टारशिप. एंड या अनदर थिंग wanted to show you guys is, अभी देखो जैसे मैं अगर git करूँ, तो देखो यहाँ ऑटो कंप्लीट आ जा रहा है, लाइक git स्टेटस ऑटोमेटिकली आ जा रहा है. एंड मैं अगर राइट एरो दबाऊँ, इट लाइक इट जस्ट लाइक फिल्स दैट थिंग. तो why does this happen? So whenever so git status is my most used git command. तो मैं जब भी git करता हूँ, most probably I'm just doing a git status. तो like it knows that this is my most used command. तो this is like autocomplete suggestions. Like जैसे keyboard में you type a few letters, like your keyboard gives you autocomplete suggestions based on what's like the most context appropriate thing. वैसे ही ये autocomplete suggestions देता है. And ये तो मतलब बेसिक सा हो गया. Now सोचो, so there's this tool called YouTube DL, जिससे तुम टर्मिनल से ही you can download like YouTube videos और extract MP3s. तो I use that a lot. तो जैसे YouTube DL करने से देखो मेरा ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जा रहा है, बिकॉज आई यूजुअली क्या करता हूँ, जो भी वीडियो होता है उसका आई जस्ट एक्सट्रैक्ट द ऑडियो फॉर्मेट. तो आई जस्ट टाइप यू एंड इट लाइक इट गिव्स मी एन ऑटो कंप्लीट, एंड मैं राइट एरो दबाऊँ तो इट जस्ट लाइक कंप्लीट्स इट फॉर मी. तो बहुत ज़्यादा ये कन्वीनियंट है. तो सो या लाइक तो ये सब चीज़ करने के लिए you can use this other terminal shell called Zeesh. So I'm not on bash currently, like if you guys have noticed, like by default bash at the submit, like if I type bash, I can go to bash right now. So this is like the default bash shell, but if I go to Zeesh, मैंने इसको customize करा हुआ है, तो ये आ जाता है. And हाँ, and another thing I've done is like I open a terminal, like like these characters pop up automatically. So like it's sort of aesthetically pleasing. So to do all this, like you can do it in bash as well, although it's like very convoluted, and bash is not very modern, like थोड़ा पुराना type का है, although it's like very stable, it's very functional, it's very lightweight. But like if you want all these like fancy stuff on a terminal, like Zeesh is an amazing terminal shell. तो terminal shell वही होता है, shell is just a place that takes your commands, it like
it takes your commands, it executes them, it like shows you all this extra stuff like जैसे ये prompt हो गया वगैरह वगैरह. तो बहुत सारे shells होते हैं, like bash is the most popular and the older shell. Zeesh is the one I use currently and like you can really check this out. Fish बोल के भी एक shell होता है, ये भी बहुत लोग use करते हैं. And इसका and this is like a bit different from bash and Zeesh. तो जीश का बेनिफिट है कि ऑलमोस्ट बैश के जितने भी कमांड्स हैं जो भी यूज़ होते हैं ऑलमोस्ट सारे जीश में चल जाते हैं, बैश स्क्रिप्ट्स भी जीश में चल जाते हैं. तो दिस इज लाइक अ मोर मॉडर्न, नॉट रिप्लेसमेंट, इट्स लाइक अ मोर बीफ्ड अप वर्जन ऑफ बैश. तो यू कैन इंस्टॉल दिस एज वेल. लाइक जीश का अगर तुम गिटहब पे जाओ तो लाइक सारे वेट सारे इंस्टॉलेशन ये होंगे. अच्छा यहाँ पे नहीं है. So yeah, we should just like how to install Zeesh in Ubuntu say. So like you'll get articles. So आराम से just follow any of them. You can get Zeesh on the system. Now these are like not compulsory of course, but you can just use these to spice up your system and like it's helpful in the long run. It like looks aesthetically pleasing. It's very functional. So like yeah, like I highly recommend you use Zeesh. And then Zeesh के साथ ना एक package manager type का आता है called OMyZSH. तो इससे क्या कर सकते हो कि इससे यू कैन इंस्टॉल प्लगइन्स. तो जैसे ये जो स्टारशिप वाला चीज़ था, दिस इज लाइक ओमाइज़ीश प्लगइन. तो मैंने बस लाइक इसको इंस्टॉल कर दिया यूजिंग ओमाइज़ीश एंड ये आ गया. तो इट्स लाइक एज सिंपल एज दैट. तो या लाइक यू कैन रियली चेक दिस आउट लाइक ओमाइज़ीश एंड लाइक फर्स्ट गेट द ज़ीश शेल एंड देन लाइक जस्ट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस एंड लाइक गेट दिस पैकेज मैनेजर. एंड इसमें बस लाइक ऐसे प्लगइन्स के लिस्ट होते हैं, इसमें बस तुम ऐड कर देने से वो आ जाता है. तो इट्स लाइक एक्सट्रीमली कन्वीनियंट एंड यू कैन लाइक रिमूव स्टफ. यू कैन चेंज द थीम एज वेल. लाइक मैंने लाइक कलर स्कीम वगैरह भी चेंज करा हुआ है. तो ये सब काफ़ी ईजी हो जाता है. तो ओके, नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स. तो या लाइक वन ऑफ द लाइक core things that like a lot of Linux people love to swear about is like config files. Like you will always find someone like asking people for the dot files. तो dot files में वही like config files रहते हैं. तो config files क्या होता है कि it's like जो भी तुम tool यूज़ कर रहे हो उसका यूजुअली config file रहता है. तो जैसे मैं तो bash अगर यूज़ कर रहे हो तो bash rc बोल के config file रहता है. तो यहाँ पे ना like you can configure how it works. तो जैसे मैं बोल रहा था ना prompt change करने का, like I've forgotten क्या होता है. I think prompt नहीं, prompt से नहीं होता. Anyway, so like you can like add stuff here which and you can like configure how you want your shell to be. जैसे like I'll show you my Zeesh का configuration file. तो a very simple thing is जैसे मैंने ये डाला हुआ है, alias डाला हुआ है. तो हाँ, I'll talk about this. तो जैसे ना if you noticed तुम्हारा like मैंने खाली ना Zeesh rc टाइप किया था close. So Zeesh rc it's a text file, ठीक है. Like तुम्हारा यहाँ पे like ls again using piping अगर grep करूँ and I do Zeesh ना dot Zeesh right, ls slash e करने से आएगा. Yup. तो देखो dot zsrc ये एक text फाइल ही है more or less, ठीक है. It's basically it's a text file which contains this. तो अभी अगर इसको खोलने के लिए आई यूजुअली नीड टू डू लाइक विम से तुम टेक्स्ट फाइल व्यू करोगे टर्मिनल पे. सो आई डू विम, ये होम डायरेक्टरी में है. तो एंड देन डॉट zshrc rc राइट. बट दिस इज लाइक फेयरली लॉन्ग, मतलब इट्स नॉट वेरी लॉन्ग बट इट्स लाइक फिर भी इट्स लाइक 2 कमांड्स राइट. तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक एलियस डाल दिया. तो व्हाट आई हैव डन इज लाइक जब भी मैं Zeesh rc लिखूंगा तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा. सो दिस इज व्हाट एन एलियस इज. तो यू कैन लाइक सेट अप एज मेनी एलियसेस एज यू वांट. तो मैंने जैसे और एक एलियस मैंने किया था जो काफ़ी बड़ा सा था. एक मिनट. Yeah, so this is a problem. Like you don't need to understand what it does, but what happens is when you are opening a files directory on say VS Code or something, तो जैसा बहुत सारे files हों, ठीक है. जैसे like I'm not sure if you guys have noticed this like Windows या macOS में, but Linux पे ये चीज़ होता है. Or maybe it's like a Manjaro thing, but anyways तो क्या होता है कि like when you open a like say React project and then उस पे सोचो बहुत सारे node modules तुम डाल दो, which is like a bunch of files, ठीक है. This is like 40,000-50,000 loads of files. तो क्या होता है कि like like it cannot track these many number of files. जैसे तुम like git से track कर रहे हो या फिर even like normal command से
you're keeping track of the so like the like Linux has to keep a track of like all of the subdirectories, all of the files and everything, right? तो उस पर क्या करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा हो जाने से ये वाला कमांड रन करना पड़ता है, like some weird command I found on like GitHub. तो बट इसको रन करने से द इशू इज रिजॉल्व, ठीक है, एंड लाइक द एरर इज गॉन. तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग दिस ईच टाइम मैंने इसको ना एलियस में सेव कर दिया है. तो मैं भी जब इंक्रीज वॉचर कर देता हूँ तो ये रन हो जाता है खुद ब खुद. तो लाइक इफ आई डू इंक्रीज वॉचर्स, लाइक ये चीज़ रन हो जाता है, लाइक ये जो भी कमांड है. इफ़ आई डू जी शार्ज सी, तुम्हारा ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट हो जाता है. एंड इफ आई डू i3 लॉक, अच्छा ये तो तुम्हारा ही हो गया. अच्छा हाउ अबाउट लाइक वी डू अ न्यू command. So let's do an alias, say DevTalk, which does say क्या करें, cow से hi DevTalk. या तो इससे क्या होगा कि मैं अभी हाँ अच्छा पहले देखो विदाउट, अब देखो DevTalk करने से तो कुछ होगा नहीं, इट्स नॉट अ बिल्ट इन कमांड ऑब्वियसली, राइट. बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एलियस बना दिया, तो जब भी मैं DevTalk रन करूँगा ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है. तो अच्छा और एक चीज़, जब भी तुम ऐसे कॉन्फ़िग फाइल्स में कुछ एडिट करते हो, यू नीड टू सोर्स इट, लाइक फॉर लाइक इफ़ यू आर एडिटिंग तुम्हारा बैश का कॉन्फ़िग फाइल या फिर जीश का कॉन्फ़िग फाइल, सो यू डू दिस यूजिंग सोर्स. तो वंस यू डू इट ये बेसिकली सेव हो जाता है. सो नाउ इफ आई डू DevTalk, ये देखो अब करने से ये वाला कमांड रन हो गया. सो आई मीन लाइक काउ से हाई DevTalk, ये करने से ये चीज़ रन होता है. तो मैंने बोल दिया कि जब भी मैं DevTalk रन करूँगा एग्जीक्यूट दिस थिंग. तो दिस इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल, लाइक यू कैन सेट अ लॉट ऑफ एलियासेस, जैसे लाइक दिस आई यूज लाइक ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. लाइक जब भी कोई बड़ा सा रिपो क्लोन करना होता है हमेशा ये एरर आता है ऑन मंजारो, तो आई जस्ट रन इंक्रीज वॉचर्स एंड इट रन्स दिस एंटायर थिंग. तो इट्स लाइक एक्सट्रीमली कन्वीनियंट. तो यू कैन कस्टमाइज इट लाइक हाउ यू वांट. जैसे मैं अपना एक नोट्स का फोल्डर रखा हूँ, वो तुम्हारा नोट्स डायरेक्टरी में है, बट इट्स लाइक it's inconvenient. No, it's not inconvenient, like I feel lazy like typing this entire thing. तो मैंने मंजारो नोट्स कर दिया है, like if I do मंजारो नोट्स like directly वो खुल जाता है. तो like और like some of my notes are here. तो ऐसे you can like set loads of aliases. तो ये सब तुम कर सकते हो. and then हाँ जैसे लाइक वो स्टारशिप वाला भी चीज़ जो यहाँ पे था. एंड इस पे क्या होता है लाइक ये सब फाइल्स में लाइक बैश आरसी या फिर जी आरसी में लाइक दीज यहाँ पे जो भी तुम कमांड रन कर रहे हो दीज आर लाइक एग्जीक्यूटेड बिफोर दिस रन्स. तो रिमेंबर लाइक आई वाज शोइंग यू दिस थिंग कि ये वाला चीज़ आ जाता है लाइक दिस कूल इमेज सॉर्ट. तो दिस इज लाइक अ स्क्रिप्ट कॉल्ड कलर स्क्रिप्ट. लाइक कलर स्क्रिप्ट करने से ये आ जाता है. तो नाउ बट आई वॉन्ट टू रन दिस, आई वॉन्ट टू रन कलर स्क्रिप्ट बिफोर आई इनिशियलाइज द टर्मिनल, राइट. तो इसलिए ना मैंने यहाँ पे ये डाल दिया कलर स्क्रिप्ट. क्या तो कलर स्क्रिप्ट रैंडम. तो बेसिकली यहाँ पे जो भी तुम कमांड डालते हो वो ना एग्जीक्यूट हो जाता है बिफोर द लाइक शेल रन्स. ओके दैट्स नॉट प्रॉब्ली टेक्निकली करेक्ट, बट या बेसिकली लाइक जब भी तुम खोलते हो अ न्यू टर्मिनल उसके पहले ही रन हो जाएगा. तो या लाइक ऐसे करके यू कैन कस्टमाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये जैसे तुम्हारा बैश का कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया, ठीक है. फिर मैं जो विंडो मैनेजर यूज़ करता हूँ, आई यूज़ दिस थिंग कॉल्ड i3 विंडो मैनेजर, विच इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे नोम होता है, केडी होता है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है ना, वैसे उसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव होता है टाइलिंग विंडो मैनेजर. तो उसके भी जैसे कन्फिग है i3 कन्फिग. वेट तो इसमें ना मैंने अपना सारा कॉन्फ़िगरेशन डाला हुआ है. एंड दिस इज लाइक ऑल कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड बाय मी. एंड इसका मतलब लाइक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, जैसे लाइक आई विल शो यू फॉर एग्जांपल i3 का डॉक्यूमेंटेशन. लाइक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट दिस इज, लाइक यू विल प्रॉब्ली नॉट यूज दिस, लाइक you use a tiling window manager. Like what I want to show you is कि like कितना customizable होता है usually. Like almost सारा जो भी tools या फिर utilities बनता है Linux के लिए. तो यार इसका like जैसे ये documentation है, user guide अगर खोलोगे like it tells you everything, like config फाइल में क्या करने से क्या होगा. तो मैंने यहाँ पे like सारा ये सब config करके रखा हुआ है. जैसे for instance to give you an example, F1 नहीं है.
हाँ या जैसे लाइक वन ऑफ द थिंग्स आई हैव कॉन्फ़िगर्ड इज लाइक मॉड प्लस रिटर्न, मतलब स्टार्ट प्लस एंटर करने से लाइक जो भी टर्मिनल है वो खुल जाएगा, एंड टर्मिनल एक वेरिएबल है जो यहाँ पे स्टोर्ड है, एंड आई यूज़ द किटी टर्मिनल। तो ये करने से लाइक स्टार्ट प्लस एंटर करने से ये खुल जाता है। If you do start plus H, like the focus goes to the left window. Basically, yeah, you can like customize keyboard shortcuts, everything. तो ऐसे ऑलमोस्ट सारे जितने भी टूल्स होते हैं लिनक्स के लिए, स्टारशिप के भी कन्फिग फाइल्स, सबके कन्फिग फाइल्स होते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, एंड इवन विम के भी कन्फिग फाइल्स होते हैं, तो सब चीज़ के कन्फिग फाइल्स होते हैं, उससे तुम यू कैन कस्टमाइज इट एग्जैक्टली द वे यू वांट, लाइक यू कैन चेंज थिंग्स अबाउट इट, यू कैन चेंज कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यू कैन चेंज की बाइंडिंग्स, जैसे या फिर फॉर इंस्टेंस लाइक वीएस कोड में लाइक यू कैन लाइक जैसे सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो, राइट? तो लाइक टू गिव एन एग्जांपल, जस्ट ओपन। हाँ, इसका जैसे वीएस कोड के यहाँ पे रहते हैं, आई थिंक सेटिंग्स पे रहते हैं, राइट? Oh, this is a shortcut to go to settings. Bro, never mind. Anyways, तो मतलब हाँ या तो मतलब yeah, the point is कि like there are loads of config files and you can like edit a lot of them, so that's also like a core Linux thing which makes Linux so great. So like you'll usually find like dot files, जैसे like मैंने अपने dot files भी रखे, आई थिंक यहाँ पे dot files भी रखे हुए हैं। हाँ, तो मैंने अपना जीश का config यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने अपना i3 के config यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ऐसे like people put all their config files in like usually on GitHub, so you can like access all of them. Okay, so this was probably a bit complicated. Like the point I wanted to make was कि like you can customize a lot of shit in Linux. So मतलब if you're interested and if you want to have a system exactly the way you want it to be, so Linux is like amazing. So like you can tinker with it, you can play around with it, and like you can edit a lot of stuff. ठीक है? So yeah, like this was about config files. Again, like कोई भी डाउट हो कुछ भी बोलना, feel free to ask. Oh हाँ, अगर तुम ये काफ़ी बार तुम देखोगे like किसी का भी अगर तुम Linux configuration देख रहे हो, usually they'll show you this. तो this new fetch क्या करता है? It just shows you कि तुम्हारा like all OS information. It has this nice logo side में, and इसका there's an anime version of it called Uwu Fetch. तो ये भी एक है. I found this like 2-3 days ago. तो yeah, like just like changes the logo and name. तो ऐसे काफ़ी है, and I think और एक I think one fetch भी है, like it's a more minimal version. Oh no, one fetch is sort of like new fetch but for the GitHub repository. तो जैसे ये जो GitHub repository है उसका तुम्हारा like details आ गया. तो yeah, like all these are like cool terminal tools you can play around with. And और भी कुछ cool चीज़ें जैसे like C matrix, like मैं lock screen की जगह यही यूज़ करता हूँ. तो if you are like people of culture, मूवीज की याद आ गई। yes वो वाला ही है. You can do this like ऐसे बहुत सारे cool चीज़ें, like C bonsai करोगे, so like there's a bonsai, so there's no reason at all, like it's just aesthetic. And they're like good tools as well, like Bashtop अगर करोगे, it like shows you system information. It's like task manager but on the terminal. So Bashtop is cool. फिर तुम्हारा and the other thing is like you know once you start using Linux, you'll start doing a lot of things on the terminal itself. ठीक है, जैसे like I do not use a proper like जैसे Windows Explorer होता है, या फिर even on GNOME में क्या होता है, I think Dolphin is KDE. GNOME में I forgot the file explorer, I think Nautilus or something. Anyways, जो भी तुम्हारा GUI file manager होता है, like I don't use GUI file managers now. I use this thing called Ranger. तो this is like a terminal file manager. So this is like entirely keyboard based, like you can search for things quickly and you can like navigate stuff fast. So instead of like navigating it on the terminal, you can navigate it using Ranger. तो ऐसे बहुत सारे terminal tools हैं, and like I'll show you my it is like this is my music player. So I do not use a GUI music player, so this is like a terminal music player, and यहाँ पे play करने से it's like very lightweight, it's like barely takes a few megabytes like on the RAM. And it's very functional. It has all keyboard shortcuts, and like yeah, I can and like global shortcuts we have. Like even if I'm not on the screen, I can like play pause music, like stuff like that.
So there are like lots of terminal tools with there's like काफी novelty tools as well, like RTV बोल के एक tool है. इससे तुम terminal से you can browse Reddit. So it takes a bit of time. Yeah, this is the Reddit homepage on the terminal. So like I just click something. थोड़ा time लगाता है, but yeah, ये तो like, चाहिए था अब. yeah, like you can do it, like it's there. Someone has made it. हितांश की नई एडिक्शन मिल गई हमें. Yeah, LSD के बाद RTV. तो ये भी काफी cool है. So फिर casually promoting LSD once more. Yep. तो ऐसे ऐसे काफ़ी कूल चीज़ है. तो या आई गेस आई हाईली रिकमेंड चेक आउट जीश और ऐसा लाइक स्टारशिप एक है और एक पार्शल भी है. पार्शल इज ऑल्सो नाइस. पार्शल 10K. दिस इज अ नाइस तुम्हारा ये चीज़ प्रॉम्प्ट एज वेल. पहले मैं ये यूज़ करता था. हाँ, इसमें ऐसा दिखता है. तो दिस इज ऑल्सो गुड. तो पार्शल यूज़ कर सकते हो, स्टारशिप यूज़ कर सकते हो. And to learn about like Linux terminal commands, there's like all these tools, piping ho gaya, and like basic commands and stuff. So the book I had used was wait, I'll show you. हाँ, ये वाला book, Linux command line by No Starch Press. तो like काफी अच्छा book है ये. And okay, and this is also a terminal like. I'm not sure if you would call it a terminal like PDF reader, but like it's like it doesn't have a GUI like of sorts. So pura keyboard based ही है. So yeah, this is the book, and like I'll send you guys the PDF बाद में. तो ये अच्छा book है, like very user friendly, काफी compact है. तो सारी चीज़ें इसमें like navigation, piping या redirection में piping वगैरह है, keyboard tricks, like Vim वगैरह भी पढ़ाता है. Okay, and if you guys want to learn Vim, जो मैं दिखा रहा था, Vim क्या है? It's terminal text editor. It's not a text editor. You like people. It's not a text editor. So yeah, it's an editor. People use Vim full time as an IDE. Like VS Code की जगह Vim use करते हैं. वैसे भी लोग होते हैं like पूरा customize करके proper like hardcore Vim fanatics. तो Vim is pretty cool as well. And बहुत सारे जो tools होते हैं जैसे ये जो file manager है ना, इसमें बहुत सारे Vim के shortcuts भी हैं. तो like you will find Vim shortcuts everywhere. So it's a pretty cool thing to learn. तो Vim tutor बोल के है. ये you don't have to install this, पहले से रहता है. ये करने से ना I have to like teach you the entire thing, like how it works. जैसे like how do you move the cursor, like HJKL से करते हो, like how do you exit Vim. हाँ, and this is where the popular meme comes from. So if you, okay, like I'll just open a Vim. What files do we have? The package was recently खोल देते हैं. हाँ. So this is like a file, right? Now to exit Vim, like it's not Q or anything, like a colon or Q करना पड़ता है to exit it. So it's not very apparent. So like one very popular meme is like like you know like people like not being able to figure out how to exit Vim, but like now you know colon and Q. So as a Vim tutor, so it has so yeah, Vim tutor is also a text file. So but like it tells you how to do things and then थोड़ा exercises type के हैं. And you just follow this and yeah, like you'll know like the basics of Vim, like more than enough, like. And iske baad if you want to, like there are like entire books written on Vim, like it's very powerful, but again like you need a bit of time and effort to do this. There are people like who totally use Vim like full time as a code editor, like VS Code use नहीं करते हैं, like. And Vim थोड़ा weird है, मतलब like it's not like a normal text editor, but it's very powerful as well. So this is a good place to start Vim, and like even if you don't plan on using Vim, I like highly recommend ki like check out Vim. So the other like the other tool using which you can view files is तुम्हारा Nano. So if I do Nano package.tsym, this is Nano. तो Nano is a bit easier to use, like नीचे legit लिखा हुआ है like क्या करने के लिए क्या चाहिए. तो if I want to like say find where something is, so I do, so the caret thing that is control, तो control W करने से like search आ जाता है. तो script search किया, so like it shows me like where all the scripts are. So this is like a tool you want to use, you can use if you don't want to use Vim. तो yeah, and देखो and yeah exit भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो control X करने से exit हो जाएगा. Now I don't want to save it.
nano होता है. And then to just if you just want to view the contents of a file, cat use करते हैं normal. Cat package करने से terminal में out आ जाएगा. And you can use bat as well. Bat is like a modern replacement. इसको install करना पड़ेगा. You do bat package.json, like थोड़ा fancy way में दिखा देता है. So this is nice, like bat is cool. And another cool tool that I want to show you guys is something called FZF. तो ये क्या होता है कि okay, तो जितने भी searching tools हैं, okay, so if I want to go through a history of all the commands I use, right? तो मैं Control R करने से मेरा ये सारा history आ जाता है. Like these are all the commands on the terminal I have typed. Like numbers at what 7,500 right now. So now सोचो मैंने सोचो मैंने बहुत दिन पहले मैंने एक कमांड यूज़ किया था एंड आई वांट टू यूज़ दैट सेम कमांड अगेन और लाइक समथिंग सिमिलर विद अ बिट ऑफ वेरिएशन. जैसे मैंने FFmpg बहुत दिन पहले यूज़ किया था. तो जैसे मैंने FFmpg करने से लाइक सारे लाइक हिस्ट्री आ जाता है. एंड व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक इवन इफ यू डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर क्या था, what FZF does is it gives you fuzzy searching. So if on your machine, like if you're on Linux right now, if you do Control R say like you can search through your like command history. So if you search your command history, normally you have to like exactly enter like what commands you had used. But what fuzzy searching does is you can like sort of like तुमको थोड़ा सा भी याद है तो भी like चल जाएगा. Okay, it's sort of like how you search for files on Windows. Like you open the Windows search bar, right, and you just type something and it gives you like the best matches. Right, it doesn't have to be the exact thing. So FZF gives you like that fuzzy search like on the terminal. तो मैं अगर से like react कर दूँ तो yeah, like it will show me stuff like even if it is like not exactly like react करने से भी like react का सब चीज़ आ जाएगा. And then I can also use this to like find files like जैसे मैं books में हूँ. Let's do I think Control T से था. Yeah. So okay, now say like Norwegian का मैं spelling थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है. Vegan. Yeah. अगर मैं ये भी करूँ तब भी like it matches. So like this is called fuzzy searching when तुम्हारा it gives you like the best match of sorts and you don't have to be very precise. तो मैं like even spelling mistakes कर दूँ या फिर मुझे बस एक part याद है, बस like हारुकी याद है, तो like even it will still work. So this is very convenient and this is a tool called FZF. This is like a beautiful tool and you can like implement it in like loads of places. तो काफ़ी ज़्यादा helpful है. I use this a lot as well. तो ये भी बताना था, काफ़ी cool चीज़ है. And CMS Ranger हो गया, C Matrix हो गया, Z Auto Complete, LSD हो गया. Yes, we did LSD. तो yeah, like these are some like cool Linux things. और भी बहुत सारे commands हैं, मतलब और बहुत सारे tools हैं. You can like keep exploring. And a good resource is there's a thing called Missing Semester by MIT. ये मैंने करा हुआ था, बहुत अच्छा है ये. Like you can do this like यहाँ पे like you have like it's an hour-long video. They have notes as well, some exercises. So you can do this. Like they'll teach you about the shell, they'll teach you about some tool. This is great and yeah, like I'd recommend start with this book. Like if you want to like get familiar with the Linux command line. ये course भी तुम साथ साथ कर सकते हो. Although this like goes very fast. ये है like it's not a very beginner friendly course. So there's that. But ये है and other learning resources are YouTube में बहुत सारे Linux के channels हैं. So one of them is DistroTube. Like ये मैं काफ़ी यूज़ करता था like starting में. Like काफ़ी like okay, probably not the most like technically accurate, but like you can like get to know about all the things that are. तो जैसे like ED बोल के एक tool है तो which is also text editor. Like उसके बाद में you can learn like Nano versus Vim. We can compare like we just comparing both of them. So like this is quite nice and ऐसे काफ़ी other channels हैं. And yeah, and I highly recommend like learning the Linux file directory structure too. इसके लिए ये वाला अच्छी वीडियो like जो first वाली आती है, like it's a 15-minute video, like tells you like the entire file structure and stuff. There are like loads of stuff to learn in Linux and तुम्हारा तो you can use it like you can totally use it as an everyday system like instead of Windows. मैं तो at this point I just use Windows to game, like that's it. And games and even games you can play on Linux these days. थोड़ा setup लगता है like Wine Proton वगैरह use करके, but it is doable. Like you can play GTA 5, you can play like what
Dota. You can play like all these cool stuff on Linux right now. So yeah, like this is Linux. Like this is very customizable and this is free. You can tinker with it as much as you want. And even if you're not interested on those aspects, like development on Linux is extremely easier. Like even if you're on Windows, like just git bash use करते हो ना, like what is git bash? Git bash emulates a bash shell like on, तो तुम्हारे git bash में भी like you must have used ls वगैरह command. This is different from how partial or the command line works, right? तो git bash क्या करता है, like it emulates like a bash shell. So like that's how fundamental it is कि like and like even like the way like git is written, like how flags work, all these are like core Unix concepts. तो ये सब like Linux से ही आते हैं. Most of the development tools, they are written Linux first. And if you want to get into DevOps and stuff like that, तब तो मतलब it entirely runs on Linux. मतलब Docker तो पहले like Windows में चलता भी नहीं था ठीक से, मतलब काफ़ी emulation के साथ चलता था. And if you want to do computer networking, like this is the thing. If you want to do cyber security, तब तो Linux पे ही करते हैं लोग. Like you must have heard about Kali Linux and stuff. अच्छा, and don't use Kali Linux as a daily driver. It is not an operating system like which you should use. Like as a like main primary operating system. Like it's a specialized tool. Like if you want to explore penetration testing or cyber security, तब Kali Linux करना. वरना like stick to Ubuntu, stick to Manjaro, stick to you know like all these like Fedora, all these distributions. And yeah, like computer networking के लिए this is amazing. Like in fact हम लोग I think next semester we'll have this course called computer networks, and उस पे we'll use a lot of like Linux commands as well to you know investigate networks, to like see responses, stuff like that. And और क्या, हाँ, DevOps almost entirely runs on Linux, like Linux concepts. And yeah, and like even if you're working as a web developer, you'll be working with you know, stuff like npm yarn, like all these package managers and stuff. So yeah, it's just all very easy on Linux, and like everything is made for Linux first. Like it's not made for Windows वैसे. So like things are not very optimized Windows में. तो Windows में तो Linux पे development experience is amazing. You can and even if you're not interested in all this tinkering and stuff, you can still use it like जैसे Windows को use करते थे like normally, and just like development के लिए terminal use करो, वो भी तुम कर सकते हो. Yeah, it gives you freedom, it gives you power, and it's fun. Like it's cool to explore. And you know, I guess as computer science students, like it's a fun thing that we all should definitely try out. And yeah, I know like इस session में बहुत सारे चीज़ बोल दिया मैं. It's very intimidating, and perhaps instead of being fun, it became a bit intimidating. But I just wanted to show you like कितना सारा breadth है. And I didn't even touch on like the more technical aspects, like you know, there's like cyber security where you can do very cool stuff on like using Linux commands, even on like network security and stuff like that. और भी like बहुत सारी चीज़ें हैं which you can do. So this is what just was like a broad overview of like everything Linux has to encompass. बहुत सारी चीज़ हैं. And if you want to follow like Linux news, तब तुम्हारा like some beginner friendly like websites are like it's FOSS, ये अच्छा है. OMG Ubuntu is good. And if you want to read a bit more technical articles and follow like Linux development in general, LVM बोल के एक website है. This is freaking amazing. No, not LVM. What was it? Forgotten. LVM magazine. I think this was it. I've forgotten. L se kuch tha. I'll let you guys know. So that is pretty good as well. And Reddit is an amazing resource. Like and this is like general advice. Not just for like Linux stuff, but in general, like highly recommend all of you to get on Reddit. Like of course, like Reddit, so Reddit has a lot of like niche programming communities. Just like say you're into Python, so like there's like a Python subreddit. So like there's like pretty cool discussion on Python, like all the updates that have been coming. Like people share cool programs they've made. They say like this guy like does it in 150 lines of Python, like how an SQL query builder. So Reddit is quite nice. Like it's a good community. Like जो भी तुमको चाहिए उसका like community मिल जाता है. And especially for तुम्हारा like technical subjects or like hobbies, this is like very good. Like काफी अच्छा है. तो even like Linux का subreddit है. So this is amazing. Like यहाँ से you can almost follow like loads of Linux वगैरह, and like comment section होते हैं, like people discuss stuff. You know, it's quite nice like to keep up with things and you know like learn new.
एंड एक तो लर्न फिर लिनक्स खोल के भी I सब रह think लेते ना हैं. अब एंड कर देते हैं. हाँ हाँ बहुत चल चल. या थैंक्स फॉर कमिंग इन, थैंक्स फॉर कमिंग इन, थैंक्स फॉर लिसनिंग. नेक्स्ट टॉप जल्दी रखेंगे.